Hello everyone and a very warm welcome. Well, this video is going to be slightly different because I'm not going to solve any question from any of the previous math tournament over here. In fact, I'm going to answer one of the most common query. What is that query? The query is, many of my students says that, ma'am, we know how to trace an ellipse with the help of a string and a pencil. But how will we trace parabola and hyperbola with the help of string and the pencil? So that is what I'm going to share in this video. So just watch the video till the end. Don't forget to hit the like button if you like it. And please share it with your fellow aspirants and friends. So chaliye, let's start and let's see how we can trace parabola and hyperbola with the help of a string and a pencil. Well, I'll start my video with first of all reminding you how we trace ellipse with the help of a pencil and a string. So ellipse के लिए क्या किया जाता है कि देखो, you have to take two thumbtacks. Okay, you have to take two thumbtacks and then you have to keep it or press it on a cork wall. या फिर आप एक cork का एक board ले लीजिए, उस पे दो thumbtacks at some distance you have to keep. Then you have to take a string. Now you take a string whose length will be greater than the length between S1 and S2. That is the distance between two thumbtacks. ये दो nails है basically, दो कीले हैं जैसे आपने cork के board पर stick किया है. And after that you are taking a string. It should be a non-elastic string. ठीक है, inextensible string होनी चाहिए, but the length should be greater than S1 and S2. So I'm just taking the length of the string to be L, which is greater than the distance between L1 and L2. Now what you have to do is you just have to tie the ends to these two nails, or you can say the thumbtacks. ठीक है भाई. Now what you have to do, just take your pencil and keep it at this position. At this position means keep the tip of the pencil at this position and then stretch the string. You have to stretch the string. Stretch the string. Now start moving your pencil. You have to move the pencil in such a way that ये जो string है ना, ये पूरा string हमेशा stretched position में ही रहेगा. Is it possible to move the string or move the pencil in this situation? Yes, you can move the pencil keeping the string S1, S2. ये जो L length की string है ना, इसे हमेशा taut position या फिर stretched position में रखते हुए हम pencil को move करा सकते हैं. For example, suppose the pencil is at this position, the length of the string is fixed. You will be having something like this. It might be possible that you are shifting and the position of the pencil is over here. In this situation also, you will find that length of the string to fixed. Hai? So in that situation, you will be getting something like this. Total length of the string is L, which is greater than S1, S2. यानी string यहाँ पर भी आ सकती है. आपने उसे stretched position में रखना है, तो it can also be like in this way. And similarly, keep on continuing like this. तो एक position ये भी आ सकती है. String is in the stretched position and is over here. String is in the stretched position and the pencil is, yeah, tip of the pencil is over here. So many different points can be there. That means if I move the pencil by keeping the tip against this thread, or you can say the string, and keep it in the taut position. If you move the pencil, then definitely the pencil is going to construct an ellipse. You will be getting an ellipse in this situation. And what are S1, S2? They are nothing but the foci of this ellipse. So this is the most common, we can say, the mechanical construction of ellipse. This is how we construct an ellipse. आप खुद भी इसे trace कर सकते हैं, provided you have the proper tools. You need the thumbtacks. एक cork का board चाहिए जहाँ पे आप thumbtacks को stick कर सकते हैं, और एक inextensible string की length की जरूरत है, और whose length should be greater than S1, S2 is required. उसे tie करिए, pencil लीजिए या pen ले लीजिए. You have to keep the tip against the string and keep it in the stretched position, and then you have to start moving the pencil. मगर pencil move करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जो string है वो हमेशा stretched position में रहेगी. In that situation, the tip of the pencil is going to trace the ellipse. आपको complete ellipse यहाँ पे मिल जाएगा, right? So ये होता है first ellipse that many of the students knows how to trace ellipse with the help of string and pencil. But now I'm going to share with you कि आप parabola और hyperbola को string और pencil की help से किस तरह से बनाने वाले हैं. ठीक है? So अब आते हैं हम second point पे, यानी अब मैं बात करूंगी parabola की. So how we are going to construct parabola with the help of a string and a pencil. So for that also you need some tools. अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले you need a wall.
ठीक है, दिस इज द वॉल दैट वी हैव. ओके, अगेंस्ट दिस वॉल आई एम गोइंग टू टेक अ रूलर. रूलर भी एक स्पेसिफिक फॉर्म में हमें चाहिए, तो स्पेसिफिक फॉर्म यानी दिस काइंड ऑफ रूलर आई विल बी टेकिंग, द एल शेप्ड रूलर आई विल बी टेकिंग. ठीक है, दिस इज द रूलर दैट वी हैव. ओके, सो दिस इज द रूलर, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो साइड एक्स वाई है ना, द साइड एक्स वाई ऑफ द रूलर इज ऑलवेज स्टिक्ड टू द वॉल. वो हमेशा वॉल के साथ स्टिक्ड है. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ रूलर यू हैव टू टेक. After taking this ruler, this kind of ruler, the next thing is you have to take a string. Now we will be taking a string. String इस तरह लेनी है कि the length of the string after tying it's one of the end over here. ठीक है, आपको एक string लेना है, उसका एक end आप इस point पे tie करोगे, and secondly the second end will be tied at some point S. See, जो S है ना वो wall पे नहीं है, wall से away है, so point S पे आप string का second part tie करोगे. Length of the string is L. ठीक है, इस पॉइंट को मैंने z अज्यूम कर लिया, और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना दैट हैज टू बी इक्वल्स टू yz. यानी जब आप टाई कर लेते हो ना एट द पॉइंट s एंड z, जो लेंथ हमें मिल रही है विच इज मूवेबल, विच वी कैन यूज, दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्चुअली yz. वो आपको yz के बराबर लेनी है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज द स्ट्रिंग नाउ यू हैव टेकन इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ yz. अब आप उसे इस तरह से होल्ड करेंगे. अगेन आप एक पेंसिल लेंगे और स्ट्रिंग को इस तरह से होल्ड किया जाएगा. ठीक है, जो स्ट्रिंग है ना दैट हैज टू बी स्टिक्ड टू द रूलर, उसे रूलर से आपको स्टिक करके रखना है. द अदर एंड इज एट एस. द अदर एंड इज एट एस. इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आई विल बी गेटिंग द पेंसिल का पॉइंट एट दिस पॉइंट. राइट, यू हैव टू कीप द स्ट्रिंग इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन. आपको स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड पोजीशन पे रखना है, बट द पेंसिल हैज टू मूव पैरेलल टू द रूलर. इनफैक्ट उससे अटैच होकर ही चलनी चाहिए, उससे स्टिक होकर पेंसिल को मूव कराना है. ठीक है, पेंसिल को मूव कराने का मतलब ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट कीप द टिप ऑफ द पेंसिल स्टिक्ड टू द रूलर. ठीक है, सेकंड थिंग इज द स्ट्रिंग इट हैज टू बी इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन. एंड थर्ड, वी नो बिकॉज द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू z एज वेल एज s, द पॉइंट और द स्ट्रिंग का जो शेप होगा ना वो कुछ इस तरह ही नजर आएगा जैसा अभी नजर आ रहा है. राइट, so this is the starting position. Suppose now what you have to do, the next thing is now you will start moving this ruler in this direction or in this direction. It will move parallel to yz length. ठीक है ना, जो yz है ना उसमें upward या downward movement होगा. इस तरह से होगा कि this xy will always be sticked to the wall. The xy will always be stick to the wall. You just have to bring this ruler a little down or little up. ठीक है, keeping in mind that the pencil का tip should always be sticked to the wall or sticked to the ruler, and this string should always be in the stretched position. ठीक है, तो जब आप इसे मूव कराएंगे, यानी सपोज मैं इसकी एक दूसरी पोजीशन लेती हूँ, दूसरी पोजीशन में हमने इसे मार्क कर दिया ओवर हियर, कि सपोज यहाँ पे रूलर आ गया है. ठीक है, शिफ्ट होते होते रूलर का पोजीशन अब मुझे यहाँ पे मिल रहा है. This is the new position of the ruler that I am considering over here. Again, अब मैं मार्क करने जा रही हूँ फिर से स्ट्रिंग का पोजीशन. Z का पोजीशन ये आ चुका है, Z का पोजीशन ये आया है. You have to keep the pencil attached to the ruler. The string should be in the stretched position. तो अब जो स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग को भी स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखना है, और पेंसिल का टिप आपको अटैच करके रखना है. at which point? At the point which is nearer to or which is like it should be attached to the ruler. ठीक है, okay, and the other end is sticked or attached to point S, keeping the string in the stretched position. We are trying to keep the string in the stretched position. So this is what we will be getting. The point of the pencil will now be taking this position. Right, string को attached या stretched position में रखते हुए पॉइंट को you have to keep stick to the ruler. ठीक है, ये दो चीजें अगर ध्यान में रखते हैं तो नेक्स्ट पोजीशन जो मुझे पॉइंट की मिलेगी, पॉइंट ऑफ द पेंसिल दैट आई विल बी गेटिंग विल बी दिस वन. कीप शिफ्टिंग. सो आई एम जस्ट टेकिंग वन मोर पोजीशन. एक और पोजीशन लेते हैं. नेक्स्ट पोजीशन अगेन मैं ब्लू से बनाती हूँ. अब तो हमारे पास सपोज ये रहा नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द रूलर.
So I am taking the next position of the ruler. Let this be the new position that we have. Again, I will be tracing the string. White से string बनाते हैं. Z का position यहाँ आ चुका है. String को बिल्कुल भी आपको क्या करना है, बिल्कुल attach करके रखना है ruler से. ठीक है, attach करके रखेंगे. And the other end is attached to S. जो pencil होगा ना, that has to be sticked to the ruler. String should be in the stretched position. Keeping these two things in mind, now I can see that pencil will be coming over here. जो pencil का position होगा वो कुछ इस position पे आपको नजर आ रहा होगा. जो pencil होगा वो कुछ इस position पे नजर आएगा. तो एक बार तरीके से बना देते हैं इसे. ये देखिए, ठीक है. Now, if you keep shifting it away, again the points you will be getting somewhere over here. So when I join all these points, when I'll be joining all these points, what actually I'm going to get here is a parabola. ठीक है, आपको एक parabola construct होता हुआ नजर आएगा. That means जो tip of the pencil होगा ना, that tip of the pencil is going to construct a parabola, right? दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. एक तो सबसे पहले जो चीजें हमने लिए वो मैं आपको फिर से बताती हूँ. वी आर टेकिंग अ रूलर जिसका XY साइड हमेशा वॉल के साथ स्टिक रहेगा. एंड देन दिस इज द YZ पोर्शन. Z पर और इसी प्लेन में एक पॉइंट हमने S लिया विच इज नॉट ऑन द वॉल. नाउ वी आर टेकिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इक्वल्स टू द YZ लेंथ जिसका एक एंड Z पर टाई किया. द अदर एंड इज टाइड टू S. Now you are taking a pencil and then stretching this string with the help of point या tip of the pencil. टिप ऑफ द पेंसिल से आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है, बट आपको पेंसिल का टिप हमेशा इस रूलर के पोर्शन YZ से स्टिक करके रखना है. ठीक है, जो पेंसिल का टिप होगा ना वो हमेशा रूलर के YZ पोर्शन पर स्टिक रहेगा और जो स्ट्रिंग होगी दैट हैज टू बी इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन. नाउ यू आर मूविंग दिस रूलर अप एंड डाउन in this position, up and down position में, keeping in mind that XY should remain sticked to the wall. You have to move it up or down. If you move it like this, keeping all these things in mind that the string is stretched and the tip of the pencil is sticked to the portion YZ of the ruler, then you will find that tip of the pencil is actually constructing a parabola. ठीक है, तो आपको इस तरह से parabola मिलेगा. क्या रीजन है कि you are getting the parabola? Let me explain that thing as well. तो क्यों मिलता है पैराबोला? बेसिकली ये जो L है ना जिसका लेंथ हमने YZ लिया, तो अब आप नोटिस करो क्या हो रहा है कि मैं सपोज इस पॉइंट को कहीं हमने P पॉइंट लिया है, नहीं लिया है, तो आई एम कॉलिंग दीज पॉइंट्स एज P. सो L एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू PZ प्लस PS, करेक्ट ना? बट PS is also equals to PY. How can you say that PS is equals to PY? Because we know that PZ plus PS जो है ना, this is the total length of the string. And total length of the string को I can also write that this is equals to YZ. What is YZ? YZ is nothing but YP plus PZ. अब देखो PZ is already there, PY. So I can say that basically I am getting PS is equals to PY. So P is that point in the plane of the line or the wall, and the point is P is that point in the plane which contains this yellow line, and the fixed point is such that S is not on the wall or S is not on the line, and P का distance from the focus, ये रहा focus हमारे पास, and from the line is always equal. PS is always equals to PM. What is the basic definition for the parabola? It is the locus of that point P which moves in the plane of, or the plane containing a fixed line and a fixed point. The point is not on the fixed line, and the point P moves in such a way such that its distance from the fixed point is always equals to its distance from the fixed line. So यही condition तो हमने string पे भी लगा रखी है. We are always saying that P is moving such that PS is always equals to PX. PS is always equals to PY, sorry. PS is always equals to PY. PY क्या है? PM है. If the two things are equal, that means P is definitely going to construct a parabola. So I hope now you can try this. You can experiment with the ruler. This kind of ruler is available. You can find it in the market. आप इसकी help से इसे try कर सकते हो. You will be able to trace the parabola also with the help of string and a pencil, right? चलिए, now we will see how we can trace a hyperbola in the similar way. So let us see that कि hyperbola के लिए अब किस तरीके से string and pencil को use किया जाएगा. So now we are coming to hyperbola. Let us see how we are going to trace it with the help of a rod
रॉड तो ठीक है, आपके सपोर्टिव प्रॉप में आ जाएगा, स्ट्रिंग एंड द पेंसिल. So what you need for constructing a hyperbola with the help of a string and a pencil, you need a rod. ठीक है, एक रॉड आपको लेनी है एक प्लेन में, जिसका एक एंड S1 पर अटैच्ड है या फिर कहिए फिक्स्ड है. This is the rod that we are taking. Okay, this is the rod that we are taking. And rod का नाम मैंने रख दिया S1L. This is a fixed length. And its one end is attached at S1, but it can move in the plane. अब move in the plane का मतलब क्या हुआ, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी अबाउट S1 या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगी अबाउट S1, यानी रोटेट कर रही है एक सर्कुलर. यू कैन से दैट L will be moving on a circle with center S1 and radius S1L. ठीक है, तो rod S1L will move about the point S1 in the plane. ओके, ऐसा एक रॉड लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ यू हैव टू टेक अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का लेंथ लिया जाएगा L. एंड how we are going to decide the length? So let me tell you. In the same plane, first of all, after taking the rod, you mark another point S2, which is again a fixed point. ठीक है, S2 मैंने एक fixed point ले लिया है. That is different from S1. अभी क्या करना है? The next thing is, now you take the length of a string L. आपको L string की length लेनी है in such a way such that कि जो L की length होगी ना, string की जो length होगी, that has to be less than LS1. ठीक है, हम उसकी जो लेंथ लेंगे वो LS1 से छोटी लेंगे. So length of the string should be less than LS1. Now one end of the string, it has to be tied at the point L. आपने L पर टाई करना है और उसका सेकेंड एंड टाई किया जाएगा S2 पर. ठीक है, आप एक एंड को L पर टाई करोगे, the other end is tied at S2. Now the length that we are getting is L, and that L is less than LS1. ठीक है, अगेन टेक अ पेंसिल और स्ट्रिंग को स्ट्रेच करो और जो टिप ऑफ द पेंसिल है उसे अगेन रॉड के अगेंस्ट फिक्स कर दो. उसे रॉड के अगेंस्ट फिक्स करके रख दो. सो देखो, स्ट्रिंग का वन एंड L पर है, द अदर एंड इज एट S2. एंड हमने क्या किया, जो टिप ऑफ द पेंसिल लिया वो एट पर्टिकुलर मोमेंट इस पॉइंट पर आ रहा है. इनफैक्ट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हमें ये डिस्टेंसेस इक्वल जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने वापस से बनाना है. एक बार मैं वापस कंस्ट्रक्ट करती हूँ. दिस इज द स्ट्रिंग एट दिस पोजीशन एंड joined to S2. Tip of the pencil should be sticked to the rod. तो ये जो ग्रीन डॉट मैंने बनाया ना, दिस इज द टिप ऑफ द पेंसिल एंड इट इज स्टिक्ड टू द रॉड. आपने अगेन वही चीज करनी है जो पैराबोला में किया. स्ट्रिंग को आपको हमेशा स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखना होगा. एंड सेकेंडली यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके पास जो पेंसिल होगी वो फिर से रॉड के साथ स्टिक होके चलेगी. ठीक है ना, हमने पैराबोला में यही चीज कंस्ट्रक्ट की थी. तो यहाँ पे भी जो टिप ऑफ द पेंसिल होगा दैट हैज टू बी स्टिक्ड टू द रॉड. हमेशा यही पोजीशन रहनी चाहिए. एंड नाउ यू विल स्टार्ट मूविंग द रॉड. ठीक है, अब आप रॉड को मूव कराना शुरू करिए. रॉड आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन इट विल स्टार्ट मूविंग. सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन मोर पोजीशन ऑफ द रॉड. अगर हम दूसरा पोजीशन ऑफ रॉड कंसिडर करते हैं, सपोज रॉड इस पोजीशन से यहां पर आ गई. ठीक है, रॉड इस पोजीशन पर आ चुकी है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, वो तो चेंज नहीं हुई. अगेन आपको पेंसिल से स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड पोजीशन पे रखना है और टिप ऑफ द पेंसिल रॉड से अटैच्ड होनी चाहिए. तो ठीक है, तो टिप ऑफ द पेंसिल रॉड से अटैच करते हुए अब मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी. सेकेंड एंड इज अटैच्ड टू S2, वन एंड इज अटैच्ड टू L एंड पेंसिल का टिप अब इस पोजीशन पर आ जाएगा. राइट, कीप मूविंग द रॉड. तो मैं एक और पोजीशन रॉड की बनाती हूँ. एक और पोजीशन जब आप रॉड की बनाते हैं तो ये वाली पोजीशन हो सकती है. राइट, अगेन स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स्ड है. राइट, स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड पोजीशन पे भी रखना है और साथ में पेंसिल का टिप रॉड से स्टिक हुआ होना चाहिए. तो अगेन दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. So I'm going to mark this point as over here. So ये रहे tips of the pencils that we have marked. Tip of the pencil that we have marked over here, right? Rod को थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में भी रोटेट करके देखते हैं. तो I have rotated rod over here. अब यहाँ पे रोटेट किया. रोटेट करने के बाद again the same thing I'm considering. अब क्योंकि it is away from S2, पेंसिल को इस तरह से लेना है कि टिप विल बी स्टिक्ड टू दी वॉल ऑफ द रॉड, और यू कैन से रॉड से स्टिक रहेगा और साथ में अदर एंड उसका टाइड है एट द पॉइंट S2.
So अब tip of the pencil जो आपको नजर आएगा वो at this position नजर आएगा, right? So अब हम ये कह सकते हैं कि different positions that we are getting over here, the different positions that we are getting over here, if you join them together, then definitely what you're going to get is a hyperbola. ठीक है, ये जो होगा ना, ये एक hyperbola का right branch आ रहा होगा. We will be getting the right branch of the hyperbola. In this right branch of the hyperbola, or the branch of the hyperbola that we are getting, we can also get the length of transverse axis here. What is going to be the length of transverse axis? And after that I will also discuss कि इसकी left branch को हम कैसे trace करेंगे. ठीक है ना, अभी तो right branch आया, left branch को कैसे trace करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, मगर उससे पहले एक important चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें क्या मिल रहा है. Length of the string is fixed, right? Length of the string, how much is the length of the string? I can say that ये जो points है ना जहाँ पे turn ले रहा है उनका नाम मैंने p रख दिया. So length of the string is basically equals to PL plus PS2, correct? Okay. And if I subtract the length LS1 में से, if I subtract L, then I will always be getting a constant. Why constant? Because LS1 is a fixed quantity. Length of the string is also fixed. So when I subtract them, I will always be getting a constant quantity. What is that constant quantity? So you can see that LS1 minus small l. Small l का मतलब है PL plus PS2. And what is LS1? LS1 is actually equals to PL plus PS1 minus PL plus PS2. जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप नोटिस करते हो कि PL पोर्शन तो दोनों में सिमिलर है. So what I am getting here is PS1 minus PS2 is a constant. यानी point P is moving in the plane in such a way such that PS1 minus PS2 is always turning out to be a constant. और वो जो constant आ रहा है ना, that constant is less than the distance between S1 and S2. आप देख लो, जो string है वो एक तभी तो possible होगी. आपके पास हमेशा PS1 S2 एक ट्राइंगल बन के आ रहा है ना. तो अगर ये हमेशा ट्राइंगल ही बनकर आ रहा है इन जनरल सिचुएशन, तो आई कैन से PS1 माइनस PS2 विल ऑलवेज बी लेस देन S1 S2. तो अगर हमने स्ट्रिंग को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि PS1 माइनस PS2 इज ऑलवेज, देखो हमने स्ट्रिंग लेस देन LS1 इसीलिए लिया था सो दैट ये वाला कंडीशन, कौन सा कंडीशन, ये जो कांस्टेंट आएगा इट हैज टू बी लेस देन S1 S2. So difference of two sides of the triangle basically less than S1 S2 आ रहा है. So that is absolutely fine. We are getting the basic condition through which we have defined hyperbola. हम hyperbola कैसे define करते हैं? Hyperbola को define करने का एक तरीका ये भी होता है कि P is a point in the plane where the two fixed points S1 S2 lie, and P moves in such a way such that PS1 minus PS2 is always a constant. So I am getting a constant every time, and that constant has to be less than S1 S2. In this situation or under this constraint, point P will start tracing a hyperbola. So see, I am getting a hyperbola, and after that I have verified, or in fact I would say that मैंने verification करके आपको बता दिया कि yes, what we are tracing is actually hyperbola only. I hope I was not saying parabola. I'm talking about hyperbola here. So hyperbola PS1 minus PS2 is a constant, is the condition for the hyperbola, and this is what we are getting. But right now, with the length L as given, I'm just getting the right branch of the hyperbola. If someone says, what is the transverse axis of this hyperbola? You would say that the difference between LS1, that means length of the rod, and length of the string. जो length of string है और जो length of the rod है, जब आप उन्हें subtract करते हो, see, I'm subtracting it over here, ये, तो हमें जो constant मिलता है, that according to the definition of hyperbola is equals to 2a. PS1 minus PS2 जो होता है ना वो 2a होता है. 2a क्या है? Length of transverse axis है. So PS1 minus PS2 is actually equals to this thing. That means the difference between length of rod and length of the string. And दोनों का difference अब मुझे कितना मिल जाएगा? दोनों का difference I will be getting equals to 2a यानी length of transverse axis. So now I'm going to explain you how we are going to get the left branch of the hyperbola. In fact, वही figure वापस use करते हैं, देखो. Now what I'm going to do, if I want the left branch of the same hyperbola, what you have to do is just take the same rod लेंगे, attached at the same point S1, but string का length अब change करना पड़ेगा. Now I'll take the length of the string as L dash. L dash has to be greater than LS1. अब आप उसे LS1 से बढ़ा लोगे, मगर कितना बढ़ा लोगे? Because I know that the branch of the hyperbola that I'm getting have the length of transverse axis as 2a. That's why
Now you will select L dash in such a manner such that L dash minus LS1 is also equals to the same constant 2a. यानी आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो येलो स्ट्रिंग की लेंथ हमने स्मॉल एल ली थी ना, अब आप उसे L dash लीजिए. बट L dash इस तरह होना चाहिए कि L dash minus LS1 must be equals to the same difference 2a which we got over here. जो रॉड और स्ट्रिंग में डिफरेंस था ना पहले, उतना ही डिफरेंस अब भी होना चाहिए, बट नाउ स्ट्रिंग का लेंथ शुड बी मोर देन दैट ऑफ रॉड. बस अब आप इस कंडीशन के साथ वापस से दो चीजें ध्यान रखनी है कि द स्ट्रिंग हैज टू बी इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन, और जो पेंसिल होगा यानी जो पीएल पोर्शन होता है ना स्ट्रिंग का, दैट शुड बी अटैच्ड टू, दैट शुड बी स्टिक्ड टू द रॉड. जो पीएल पोर्शन है वो स्टिक टू द रॉड होगा, और साथ में अदर एंड तो S2 पर टाइड है. ठीक है, स्ट्रिंग इज स्टिल टाइड टू S2 एंड L, और पेंसिल को आपने इस तरह से पकड़ना है कि जो P पोर्शन है, जो पॉइंट टिप ऑफ द पेंसिल आएगा, वो हमेशा रॉड के साथ होगा, या फिर कहिए PL पोर्शन हमेशा रॉड से स्टिक्ड रहेगा. तो हम एक पोजीशन यहाँ पे कंसिडर करते हैं. तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस. मैं एक रॉड की पोजीशन लेती हूँ. हमने रॉड का पोजीशन लेना है. ठीक है, तो एक रॉड का पोजीशन मैंने ये लिया. सपोज दिस इज द रॉड. ठीक है, अब आपके पास है क्या? This is the point L. The string is attached to this one and the other end is attached to S2. Obviously, in this situation, I need the length of the string to be more than that of LS1, right? And pencil ka position at certain point over here hai. So point P is over here and it is attached to S2 as well. So here is the position of point P. Another rod ka position mark karte hain. रॉड की दूसरी पोजीशन को मार्क किया. लेट दिस बी द अदर पोजीशन. दूसरी पोजीशन को मार्क करने के बाद अगेन जब आप स्ट्रिंग को देखोगे तो स्ट्रिंग इज लाइक दिस एंड इट इज अटैच्ड टू S2. इट इज अटैच्ड टू S2 वंस अगेन. तो टिप ऑफ द पेंसिल नाउ यू विल बी गेटिंग एट दिस पॉइंट P. ये रहा पॉइंट P, ये रहा सेकंड पॉइंट P. Like this you will keep getting different positions of the point P this side as well. So this is how the other branch, or you can say the left branch of the hyperbola, will be constructed with the help of a string and the pencil. Fine. So I hope you enjoyed this whole chota sa lecture on mechanical construction of parabola, ellipse and hyperbola with the help of string and the pencil. Try these. You are definitely going to enjoy this chota sa jo construction hai, ye definitely aap log enjoy karenge. So अगर enjoy करेंगे और enjoy किया भी है तो please do not forget to hit the like button. Please share it with your friends and fellow aspirants and help us increase our subscribers base. Thank you for watching. See you in the next video. Meanwhile, take care and bye-bye.